moderate functional impairment. But later on, it was found that there are severely displaced fractures, severely communicant fractures about. आज मैं आपको इंट्रामेडुलरी नेलिंग ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैक्सिको में 16वीं शताब्दी में रेसिनस वुड यानी कि लकड़ी का उपयोग इंट्रामेडुलरी कैनाल में डालने के लिए होता था ताकि हड्डी का जुटान हो जाए, लेकिन उसे असफल होना ही था। कीटाणु संक्रमण के कारण वो असफल हो गया। उसके बाद आइवरी हाथी दांत का उपयोग होता था, क्योंकि उसका रंग आदमी के हड्डी से मिलता जुलता था। तो ऐसा विश्वास था लोगों का कि 18वीं शताब्दी में ऐसा विश्वास था कि बायो फ्रेंडली और बायो कंफर्टेबल होगा, तो हड्डी के आदमी के हड्डी के साथ घुल मिल जाएगा। 1940 में असली क्रांति इंट्रामेडुलरी नेलिंग के क्षेत्र में हुआ, जब कुंसब ने, जर्मनी का सर्जन था, उसने सबसे पहले कुंसब नेल बनाया और इसे के नेल भी कहते हैं। ये के नेल है, देखिए ये निकालने के लिए ऊपर में एक छेद है और इसमें निकालने वाला औजार को फंसा करके निकालते हैं और डालने के लिए इसको अपर एंड ऑफ द फीमर से डालते हैं। 1939-40 में इस नेल का उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी उपयोग किया जाता था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में थॉमस नेल और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था, जिससे बहुत दिन तक मरीज को, सैनिकों को बेड रिडन रहना पड़ता था और बेड शोर और निमोनिया, किडनी फेल्योर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का चांस रहता था। और इस नेल के आने से सेकेंड वर्ल्ड वार में जो सैनिक विभिन्न देशों से जर्मनी गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लेने के लिए, वे अपने अपने देश लौटे तो उनके देश में देखा गया कि इस नेल का उपयोग कुंसब ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, और जल्दी से जल्दी मरीज उसमें खड़ा हो जाता था और चलने फिरने लगता था, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता था और हड्डी भी जल्दी जुड़ती थी। लेकिन यह लॉ नहीं था। तो 1950 में ही कुंसब ने ही ये आइडिया दिया था कि अगर ऊपर नीचे इसको लॉक कर दिया जाए तो रोटेशन नहीं होगा। ये रोटेशन हो रहा है, ये घूम रहा है अगल बगल और ऊपर नीचे भी नहीं जाएगा, तो ज्यादा रिजिड और स्टेबल फिक्सेशन होगा। तो 1950 में आइडिया कुंसब ने किया और इस नेल को भी सेपरेट होता है और क्लोवर लीफ सेपरेट होता है। उसके बाद बीच में 1950 में रीलिंग का कंसेप्ट आया, ताकि कॉन्टैक्ट एरिया जो इंट्रामेडुलरी कैनाल का है और नेल से ज्यादा कॉन्टैक्ट हो और मोटा नेल डाला जा सके, ताकि ज्यादा रिजिड और स्टेबल फिक्सेशन हो सके और जल्दी से जल्दी मरीज को हम लोग चला सके। तो ये कॉन्सेप्ट था 1950 में। और 1970 में ग्रॉस एंड केम्प ग्रॉस एंड केम्प ने सॉलिड नेल को इंटरलॉकिंग नेल का इंट्रापेटलर रूप से करने का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ लॉक कर दिया जाता है। और हालांकि ये कॉन्सेप्ट 1950 में कुंसब ने ही दिया था, जिसे डिटेंशन बोर्ड को उन्होंने कहा, और बाद में 1970 में ग्रॉस एंड केम्प ने इसको स्पेशल चिप बनाया, जिसके थ्रू अपर फ्रैगमेंट और लोअर फ्रैगमेंट में दो बोल्ट स्टैटिक
और लॉकिंग, स्टैटिक और डायनेमिक लॉकिंग का कॉन्सेप्ट भी ग्रॉस एंड केम्प ने किया। और मॉडर्न युग जो है बहुत दिन तक 1990 तक ये इंट्रापैक्टर रूप से इस नेल को डाला जाता था टिबिया फ्रैक्चर में। तो उसके बाद फीमर फ्रैक्चर में भी इसको डाला जाता था। ये फीमर नेल है और दो ऊपर छेद है और दो नीचे छेद है। इसको भी जीग के थ्रू लॉक किया जाता था। बाद में देखा गया कि नीचे के छेद लॉक करने में परेशानी आती थी, इसलिए फ्री हैंड टेक्निक से आजकल डिजिटल लॉकिंग किया जाता है। तो ये फीमर नेल है और ये टिबिया नेल है जो आजकल इंट्रापैक्टर रूट से यूज किया जाता है। इसे सुप्रापैक्टर रूट में भी यूज कर सकते हैं। तो अपर फोर्थ ऑफ द टिबिया फ्रैक्चर में इंट्रापैक्टर रूट से करने से 90 डिग्री फ्लेक्शन ऑफ द नी करना पड़ता है। तो इसलिए 90 डिग्री फ्लेक्शन करने से प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट का एंटीरियर एंगुलर डिफॉर्मिटी आता है ड्यू टू पुल ऑफ द पैटेला। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, पुल ऑफ पैटेला को न्यूट्रलाइज करने के लिए सुप्रापैटेलर नेलिंग का कंसेप्ट आया, जिससे 1996 में टोर्नेटा एंड कोलिंस ने ये कॉन्सेप्ट किया। सेमी एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ द नी में, नी के द्वारा अगर नेलिंग किया जाए सुप्रापैटेलर नेल रूट से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90 डिग्री फ्लेक्शन करने के कारण इंट्रापैटेलर रूट नेलिंग रूट द्वारा नेलिंग करने में उसे रोका जा सकता है, क्योंकि वो पैटेलर पुल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है सेमी एक्सटेंडेड पोजीशन में रखने से। तो फर्स्ट टाइम टोर्नेटा 2 एंड कोलिंस ने ये कॉन्सेप्ट दिया। बाद में 2012 में एओ ग्रुप ने जॉनसन एंड जॉनसन के साथ मिल करके सुप्रापैटेलर नेलिंग का जो डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट सेट बनाया, जिग और प्रोटेक्टिव स्लीव, जो कि इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, और उसी के थ्रू रिमिंग, गाइड वायर और नेल को डाला जाता है ताकि इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो। तो डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाया एओ ग्रुप ने, जिसे जॉनसन एंड जॉनसन, स्मिथ एंड नेफ्यू ने बनाया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह होता था कि ये काफी महंगा था, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती थी और 35 से 40 लाख का इंस्ट्रूमेंट सेट आता था और 35 से 40 हजार का इम्प्लांट का खर्च पड़ता था। तो गरीब मरीजों के लिए छोटे छोटे नर्सिंग होम में इसे यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले ही क्लियर कर सकते थे। इवन सरकारी हॉस्पिटल में भी, छोटे छोटे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसे नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक ऑपरेशन के लिए उतना सरकार भी खर्च वहन नहीं कर सकती है, उतना महंगा इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद डॉक्टर RC ठाकुर ने, डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक को इनोवेट किया, जिसमें फ्री हैंड टेक्निक से अपर एंड लोअर लॉकिंग किया जाता है और जिग का उपयोग नहीं किया जाता है। और PFN A2 सेट से ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लीव को यूज किया जाता था, क्योंकि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सेट का लंबाई चौड़ाई जो ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लीव यूज किया जाता है, तो उसका लंबाई चौड़ाई और उसका डायमीटर जो होल होता है उसको डालने के लिए, रिंग करने के लिए, तो सेम ही था। तो उसको PFN A2 सेट का ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लीव यूज किया और एक कॉलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर, टिबियल इंट्रापैटेलर रूट का टिबियल नेल
एक्सट्रैक्टर है जिसे कलर कोडिंग कर दिया गया। इसके 4 फेस है, अपर एंड में 4 फेस है जिसमें ABCD लिखा गया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें आप अपने स्टाफ का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन, सोहन, राम, श्याम, कुछ भी लिख सकते हैं। या इसमें हमने ABCD लिखा। अगर ए जो है, अगर नेल को कसने के बाद इसमें कलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर में कसने के बाद अगर एक कंसाइड करता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द नेल से, तो थ्रू आउट नेलिंग प्रोसेस एक कंसाइड करेगा इंटीरियर सरफेस ऑफ द नेल से, और C और B कंसाइड करेगा लैटरल एंड रेडियल सरफेस से, और D जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन बना रहता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट सेट का कॉस्ट 0 हो जाता है और नेल वही रहता है जो उनका पर्टिकुलर रूप से डाला जाता है। अतः यह बहुत कम खर्च में हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट सेट का खर्च 0 और 2000 से 5000 तक जो इंस्ट्रूमेंट नेल स्क्रू का खर्च पड़ता है। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। और बाद में कुछ परेशानी आया नेल को डालने के प्रॉपर पोजीशन में, तो RCT ने इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर को बनाया गया जिसमें नेल को डायरेक्ट कस किया जाता है और इसमें लॉक हो जाता है, और लॉक करने के बाद जो है इसको नेल को डालते हैं। अपर लेवल ऑफ द कलर कोडिंग किया जाता है, और इसमें एक बीच में इंस्ट्रूमेंट के बीच में RCT ने इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर में सेंटर में एक होल होता है जिसमें टॉमी बार लगा करके नेल को पोजीशन में रखते हैं। जब हम हैमर करते हैं तो धीरे धीरे नेल रोटेट करता है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। सो इसको रोटेट करके प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं और उसके बाद नेल को अंदर डाल देते हैं। Till last end of the nail seated in proper position, this can be rotated in proper position. So ये है इतिहास नेलिंग का, के नेल से लेकर सुप्रापेटलर नेलिंग तक। So thank you very much for patient hearing of history। बहुत ही रोचक हिस्ट्री है इंटरलॉकिंग नेलिंग का। So के नेल टू डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापेटलर नेलिंग ऑफ इंडिया, ये इतिहास है नेलिंग का। धन्यवाद। आज मैं आपको इंट्रामेडुलरी नेलिंग ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैक्सिको में 16वीं शताब्दी में रेसिना। The number one myth is interlocking nailing of femurs will severely impair the shoulder function due to rotator cuff damage. The reality is, with proper technique and entry point, the rotator cuff damage can be minimized and shoulder function can be preserved.
So the myth number 2 is there is always chance of radial nerve injury as it is a complication for the interlocking nailing of humerus. And it is not a complication for the open reduction internal fixation for plating. So it is, yes, it is, there is risk of radial nerve injury when the fracture is at the spinal groove. There is chance of the radial nerve injury, but in the rest of the part, if the fracture is in the rest of the part of the humerus, there is minimum chance of the radial nerve injury when the instruments like the guide wire, remove, and the nail is introduced after proper reduction of the fracture in the distal fragment. Both AP and lateral view, the fracture is reduced properly. Only then these instruments are introduced inside the distal fragment. And don't allow your instrument to wander inside the soft tissue. So these are the two myths which is associated with interlocking nailing of humerus, and other two controversies whether which position of the patient should be used for the interlocking nailing of humerus. There are three positions. Number 1, supine position. When it is used, it is comfortable for the anesthesia point of view as well as the surgeons. But the distal locking, which is done by freehand technique, is slightly difficult and tricky because the anterior surface of the distal part of the humerus is triangular. So finding the entry point for the distal locking is slightly difficult because slipping of the dilbit or KY. So it should be at angle, it should be introduced at angle, and then it should be kept in a straight line. So this is the disadvantage of supine position, and in lateral position as well as the prone position, the distal locking is done from the posterior surface, which is flat. So the entry hole, finding the entry point for the distal locking is easy because the surface is the flat, but it is uncomfortable position for anesthesia point of view, and the surgeons, it depends on the surgeon's choice. So I do use supine position for all my interlocking nailing. Number 3 controversy is because it is non-weight bearing bone. So one screw distal and one screw proximal is sufficient. But I use 2 screw distal and 2 screw proximal because the 2 is always better than 1, always stronger than 1. If it is just like the 2 kidney present in human body, if one fails, others start working. So, and 2 engines in the aeroplane, one engine fails, the other start working automatically. So, if one screw is not working, then the other screw will do its work. So, the fixation is better by 2 screw proximal and 2 screw distal. So, friends, these are the advantages of interlocking nailing over the plating of the humerus, and these are the myths, and these are the controversies whether 2 screws should be put proximal as well as the distal, what position should be used in this talk, and let us get tuned for the next video and subscribe my channel for more updates on orthopedic surgery and insight. I have been making videos on YouTube for months, but I am not reaching 1,000 subscribers, not 4,000 watch hours, and without monetization, how will the channel earn? Then I found
ये है मिस्टर प्रशांत कुमार जो असम से आए हैं। उनके दाहिने कूल्हे का एक्सरे पिक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी डिफॉर्म्ड हो गया है और एक दूसरे में चिपक गया है। कूल्हे का हड्डी कूल्हे का गोला कप में चिपक गया है और काफ़ी हड्डी बन गया है उनके। इसके कारण काफ़ी रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट में उनको हो रहा था। वे ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे कुर्सी पर। ये है एक्सरे पिक्चर जिन्हें टोटल कूल्हा उनका बदल दिया गया है ऑर्थो सर्जिकल केयर सेंटर में। और 10 दिन के बाद वो वॉकर पे चल रहे हैं और फिर सीढ़ियों से उतर रहे हैं। इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि उतरते समय पहले प्रेशर वाले पैर कूल्हा को बदला गया है, उसको पैर रखना, उस पैर को रखना है। उसके बाद अच्छे पैर को रखना है और चढ़ते समय पहले अच्छे पैर को ऊपर रखना है। उसके बाद जिसमें कूल्हा को बदला गया है उसको रखना है। ये अब ऑपरेशन के बाद ये कुर्सी पर बैठ सकते हैं, इवन लो चेयर्स पे भी बैठ सकते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल और पेनलेस मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट आप देख सकते हैं किस तरह से खुद खड़े हो जा रहे हैं और लो चेयर पर भी आराम से बैठ जा रहे हैं। ये बिना सहारा के 10वें दिन बिना दर्द के चल पा रहे हैं। छपरा के डॉक्टर आरसी ठाकुर ने हड्डी फ्रैक्चर के इलाज में क्रांतिकारी तकनीक विकसित कर देश भर में पहचान बनाई है। उनकी तकनीक से 35 लाख रुपए तक का महंगा इलाज मात्र 35,000 में संभव हो सका है। ऑर्थो सर्जरी में योगदान के लिए गुवाहाटी में आयोजित इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि छपरा, सारण और बिहार के लिए गर्व की बात है। इनोवेशन अवार्ड इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया है, जो कि गुवाहाटी IOACON 25 में दिया गया है। और यह अवार्ड पूरा भारतवर्ष में 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिला है, जिसमें बिहार से मेरा ही नाम है। अतः छपरा जिला में जिला का कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन या बिहार का कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को पहले बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसमें मेरा नाम आया है। The supine position of the patient with a bump in the interscapular space, in which position I do interlocking nailing of humerus. With the traction only, with the assistant, both sides, the traction is given, and external rotation of the proximal fragment is done with the hand only. And you can see in this picture, evident in the fluoroscopy picture, you can see, and I am externally rotating the proximal fragment to see the lateral view of the fracture. So after reduction of the fracture in both AP and lateral view and confirmed on the fluoroscopy picture, we make and we introduce a 2.5 millimeter or 3 millimeter KY or steamer pin percutaneously
at the selected entry point, both in FD and lateral, the entry point is usually in FD view, it is at the point at the junction of the articular and non-articular fracture. And in lateral view, it is the line with the intramedullary canal. So the fracture is in the upper part, upper fourth of the humerus. The entry point is it is intra-articular surface of the humeral head, because it should be in central in both FD and lateral view. So I am introducing 2.5 millimeter experiment pin percutaneously at the selected entry point. You can see this is the FD view. I am selecting the entry point. It is intra-articular portion of the. You can see in this picture, because the fracture is at the upper fourth of the humeral shaft, and this is the lateral view. I am seeing it in the lateral view. It is inside in the line of the intramedullary canal, and it is inside the intramedullary canal in both the FD and lateral view, confirmed in the fluoroscopy picture. I am exchanging this statement in with a kind wire. A 2 millimeter kind wire is exchanged for this statement pin, 2.5 millimeter statement pin, and after making a stand hole, after making a small ring, and this is right wire is inside the proximal fragment in the proper position inside the intramedullary canal in both the lateral view, and you can see the fraction is reduced. And take your time while introducing the fracture side, while crossing the fracture side and introducing the right wire in the distal fragment. And lateral, and now I am inside the distal fragment. Don't put the kind wire inside the soft tissue, and don't do try. Then this is the reading of the intramedullary canal. Serial reading is done. First of all, with the 6 millimeter reamer, and it is being read. And then the 7 millimeter reamer is used up to the lower end of the humerus. It is about up to the 2 to 2.5 centimeter, proximal to the 8 millimeter reamer is being used. In this picture, as you can see in active view, and it is crossing the fracture site. You take the proper time, and the fracture should be reduced while doing leaving, and it should not be in varus and valgus position, and it is inside the distal fragment. As you can see in this picture, the 8 millimeter reamer is inside the distal fragment, is introduced. So after reading, we introduce a 7 millimeter nail of appropriate size with hand movement only. Don't use electric reamer or hammer. Only the last few centimeters of the nail is introduced by hammering. So it is a well-placed nail up to about 2 to 2.5 centimeters above the alveolar fossa. And now I am deciding where I should put my incision for distal locking. And this is the K-wire position on the skin, put on the skin horizontally, and another K-wire vertically overlapping the nail and crossing the bone. So where the both
KY cross each other, the bisecting point in the middle of the proximal bone, dynamic bone, will be my point of incision in the skin. So after putting about 1 to 1.5 centimeter length skin incision, we do dissection, soft tissue dissection with the fingers or the artificers, and then a 1.5 millimeter KY is used to make a hole. After making both holes circular, the lower hole circular and relaxing the upper hole, dynamic hole in the blade as much as possible, and this is the 1.5 millimeter KY is being put. You see, this is put in angle because the shape of the anterior surface of the distal femur is triangular, so it should be put in angle. So introducing near cortex, we do drilling of the distal cortex through this hole, and after drilling we have put both the screw. You can see in AP and lateral view well sized screw and well placed screw inside the hole in both AP and lateral view. So I am putting the proximal screw down. You can see that the nail has been buried about 5 millimeters from the articular surface inside the intramedullary canal. The first screw has been put with the help of the G and drill sleeve and the sleeve. Both the screws have been put. The west side screw you can see, and I am confirming it in oblique view as a lateral view, even along with the jig. You can see that the jig is in place, and still I am confirming it whether it has gone inside the hole properly or not, and well placed to both the screw inside the both hole, well sided screw in the view, and well placed screw in the lateral view also. So this is the last step. And first of all, I do distal locking because the back hammering of the nail is done when required to reduce the distraction at the fracture site, to eliminate the distraction at the fracture site, and the fracture is compressed. But in this case, there is no distraction at the fracture site, and nail has been buried inside the intramedullary canal about 5 millimeters from the articular surface of the head. So this is the lateral view and AP view of fluoroscopy picture. You can see this is the lateral view, well placed distal screw, well sized distal screw, and this is the AP view, and you can see the final position. There are two skin incisions, one for the entry of the nail and other for the proximal to the screw. So these are the last confirming fluoroscopy picture. You can see the well placed both screw and well buried nail about 5 millimeters from the articular surface. This is the fracture. You can see there is a communicated fracture. There is no distraction. Okay, thank you. आज मैं आपको इंट्रामेडुलरी नेलिंग ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैक्सिको में 16वीं शताब्दी में रेसिनस वुड यानी कि लकड़ी। The number one myth is interlocking nailing of femurs will severely impair the shoulder function due to rotator cuff damage. The reality is, with proper technique and entry point, the rotator cuff damage can be minimized and shoulder function can be preserved. So the myth number 2
there is always chance of radial nerve injury, as it is a complication for the interlocking netting of humerus. And it is not a complication for the open reduction and internal fixation for plating. So it is, yes, it is, there is risk of radial nerve injury when the fracture is at the spinal root. There is chance of the radial nerve injury, but in the rest of the part, if the fracture is in the rest of the part of the humerus, there is minimum chance of the radial nerve injury when the instruments like the guide wire, reamer, and the nail is introduced after proper reduction of the fracture in the distal fragment. Both AP and lateral view, the fracture is reduced properly. Only then these instruments are introduced inside the distal fragment. And don't allow your instrument to wander inside the soft tissue. So these are the two myths which is associated with interlocking netting of humerus, and other two controversies whether which position of the patient should be used for the interlocking netting of humerus. There are three positions. Number one, supine position. When it is used, it is comfortable for the anesthesia point of view as well as the surgeons. But the distal locking, which is done by freehand technique, is slightly difficult and tricky because the anterior surface of the distal part of the humerus is triangular. So finding the entry point for the distal locking is slightly difficult because slipping of the drill bit or KY. So it should be at angle, it should be introduced at angle, and then it should be kept in a straight line. So this is the disadvantage of supine position, and in lateral position as well as the prone position, the distal locking is done from the posterior surface, which is flat. So the entry hole, finding the entry point for the distal locking is easy because the surface is the flat, but it is uncomfortable position for anesthesia point of view, and the surgeons, it depends on the surgeon's choice. So I do use supine position for all my interlocking netting. Number three controversy is because it is non-weight bearing bone. So one screw distal and one screw proximal is sufficient. But I use 2 screw distal and 2 screw proximal because the 2 is always better than 1, always stronger than 1. If it is just like the 2 kidney present in human body, if one fails, other start working. So, and 2 engines in the aeroplane, one engine fails, the other start working automatically. So, if one screw is not working, then the other screw will do its work. So, the fixation is better by 2 screw proximal and 2 screw distal. So, friends, these are the advantages of interlocking netting over the plating of the humerus, and these are the myths, and these are the controversies whether 2 screws should be put proximal as well as the distal, what position should be used in this talk, and let us get tuned for the next video and subscribe my channel for more update on orthopedic surgery and insight. ये है मिस्टर प्रशांत कुमार जो असम से आए हैं. Hello friends, I am Dr. RCT Ortho, orthopedic surgeon, Chhapra, Bihar. Today I will give
a demo of PFN surgery for an osteoporotic patient for intertrochanteric fracture of the femur. The design of the spiral blade provides a stable fixation of this fracture and you can make mobile or patient. So, let us come to the surgery. This is the X-ray of 72 years male having osteoporosis with a fracture of the intertrochanteric unstable tie. And this is the post-operative X-ray of the same patient, and now I'm going to start my surgery. The skin incision, before the skin incision, I will draw a line from anterior superior iliac spine down to the table, and another line from the tip of the greater trochanter towards this first line, and the point of bisection of these two lines is the point of incision for this surgery. So I am making an incision at these bisecting points where the two lines bisect. So I am giving incision about 2 centimeters, as you can see in the picture. So I am feeling the correct point of entry. It should be at the junction of the anterior 2/3 and posterior 1/3 in lateral view, and in epi view it is just medial to the greater trochanter in the piriform fossa. So I am feeling with my fingers the correct entry point. So after feeling this, I am confirming, I am introducing a bone out at the correct point selected, and then I am confirming this whether this bone owl is entering at correct selected point or not in CR picture. So I am introducing the owl in correct position after confirming the entry point in CR picture, both in epi and lateral view. So this is the epi view. It is entering in proper selected position, and this is inside the intramedullary canal in correct position, going medially in epi view, and this is hammered if it is in place inside the intramedullary canal in proper position, confirming in both epi and lateral view, and then I will pull this bone out for 2 centimeters to introduce the guide wire. The depression or groove present in the lateral side will guide this guide wire inside the hole, and the guide wire is entering inside the intramedullary canal along the depression or groove present laterally in the owl. So it is inside the intramedullary canal, well placed in epi view,
And now I will remove the owl. So I have removed the owl and I'm doing reading of the medullary canal. In the osteoporotic patient, the reading is not required. This is for the measuring the size of the intramedullary canal, diameter of the intramedullary canal, to select the correct size of the PFN to nail. So, but this is for measuring the intramedullary canal, and I am reading by number 10 and then number 11, remove, and the size is 11 millimeter diameter, PFN as selected. And then I am reading with a 15 millimeter reamer because the upper part of the nail is about 15 millimeter diameter. So I am reading this and my assistant is pushing the reamer sleeve medially so that it goes in correct position. So it has been aimed with 15 millimeter reamer, and now I am introducing the nail of selected size, and I will hammer the reamer with the help of supine drive. I am hammering the nail inside the intramedullary canal so that the hole present in the nail comes in the central position of the neck of the femur in every view, and the spiral blade can be introduced in central position in every view. And now I am giving a incision for introduction of the spiral blade, and this is the buttress nut. My assistant is tightening it, and so that it touches the lateral wall of the femur. And then I will introduce a guide wire sleeve, and a hard and a stout guide wire is being hammered in the central position of the neck of the femur. And I'm confirming it whether it has gone in central position in both AP and lateral view. You can see in the picture it is in very good place. It is central in AP view and central in lateral view also. So I am doing rimming. Some surgeons do rimming up to the lateral cortex only, but I do rimming up to the side of the nail selected. So I have rimmed up to the proper distance, and now I am hammering the spiral blade.
after confirming it, central position in both view. And I am compressing this spiral blade by clockwise movement, and so I am compressing the spiral blade by clockwise movement and removing the screwdriver by anti-clockwise movement. So the spiral blade is introduced in proper position, both anterior and lateral view, and then my assistant is attaching the arm for digital locking on the jeep. And after measuring the screw size, I am introducing the drill sleeve for drilling the vortex for digital locking. And this is a 2.5 millimeter guide wire. I am introducing, just perforating making a dimple on the lateral vortex. I am hammering this hard and stout guide wire in the lateral vortex. And after confirming it in CR picture, I am drilling with the power drill. Both lateral and the first vortex is drilled, and now second